Hello students, I hope you are in best of your health. We are doing chapter number 2 of class 10 science, acid, bases and salts. Right now we are doing the topic salts. In that today's topic is chemicals from common salt. Means कौन से chemicals हमारे common salt से हम बना सकते हैं. Okay. In your syllabus we are actually talking about 4 chemicals that are there in your syllabus. Washing soda, baking soda, caustic soda, bleaching powder. These are the 4 ones that will see how they are made from common salt. Today we will take only the formation of caustic soda, that is sodium hydroxide. But before that you should be clear with the term common salt. What is common salt? You use the salt at your home, that you use in your food as well. That is actually common salt. So common salt, this is a common name of that salt. We call it as common salt. We can even call it as table salt. What is the chemical name? The chemical name of this salt is sodium chloride. So this is the common name, common salt or table salt. The chemical name is sodium chloride. Now what's the chemical formula of this? NaCl. Okay, we are talking about common salt right now. Now this salt, when you dissolve this salt in water, okay, it's very simple. At home also you might be noticing this thing. You take salt, just put some water, mix it, it gets dissolved. Okay, when it gets dissolved, a name is being given to this thing that's called brine. We use the word brine. Aqueous solution of this salt means take salt, take water, mix the both, then you'll get the solution that is termed as brine. I've told you about the common salt, common name, table salt, then chemical name, chemical formula, then it is called brine. Okay, the aqueous solution that you get from here, that is called brine. Now from where do you get this salt? We get this salt from 2 ways, we can say. The first thing is we get it by evaporation. Evaporation of seawater. Seawater, that's water in our seas, had got so many salts. So this is also one of the salt that's present in the seas. So we just have to go with the evaporation of that water. So after evaporation we get certain salts, then we can separate this salt from those salts. Next is from rock salt. Rock salt. See, you might have heard there are many seas that have dried up. Okay, many seas are there that have dried up. So when they have dried up, they have their beds over there. जैसे कोयले की खान होती है ना, वैसे we have that खान of this thing, common salt over there. Mining is used to extract those things. तो उस salt को कहते हैं हम rock salt. Okay, it's generally brown in color because of the impurity is present. Mining is generally preferred over there. Okay, it's called rock salt. So I think we are done with the things that we are supposed to tell you. Common salt, it's called sodium chloride. Its chemical name, chemical formula. When you dissolve this in water, it's called brine. How do you get it? By evaporation of seawater or from rock salt. Next thing is you can use it in food as well. Now talking about the chemicals, this act as a raw material. Okay, this common salt acts as a raw material for certain chemicals. I've told you the 4 chemicals that we'll be preparing, but today we'll be talking about only one chemical, that is sodium hydroxide. Caustic soda. So caustic soda is the first chemical that we are going to prepare from this salt. Now talking about this caustic soda. What is the common name of this? Caustic soda. This is a common name. The name that which, for example, our country is being known or some other country, caustic soda. Okay. Then afterwards, what is its chemical name? Chemical name is sodium hydroxide. This is the chemical name of caustic soda. Okay, sodium hydroxide. Now what's the chemical formula? Chemical formula is sodium, Na, hydroxide, OH. So the chemical formula is NaOH. Now talking about the preparation. Keep in mind whenever in exams, what main focus we have to keep on? We have to keep focus on preparation and uses of these chemicals. Okay, and today which chemical we are doing? We are doing the chemical caustic soda. So talking about its preparation. Keep in mind when you study preparation. So we'll talk about preparation. Preparation of caustic soda. How it is prepared? First of all, you have to keep in mind what do you require for the preparation. हमें चाहिए क्या उसकी preparation के लिए? We need this thing,
Obviously it's a chemical that is being used for forming other chemicals. So this compound is it's not a chemical, it's a natural compound that's used for the formation of other chemicals. So this is used, NaCl is used. So first thing in preparation is raw material. Raw material is sodium chloride, and along with this we take water. Okay, we mix sodium chloride with water, and I have told you which term do we use for this. This is called brine. ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? It is called brine. हम इस ब्राइन के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे. ओके, इस ब्राइन के थ्रू हम क्या करेंगे? विल पास इलेक्ट्रिसिटी. Whenever you see the word electricity in chemistry, it means there is the procedure known as electrolysis going on. So हम electrolysis of brine करेंगे in this particular method for preparation of this caustic soda. इसकी electrolysis होगी. After electrolysis, what you are going to get? Obviously, you will get your caustic soda. You will get your caustic soda. Along with this, you are going to get chlorine gas and hydrogen gas. These two gases also you will be getting. Even this method of preparation is also known as chlor-alkali process. It's also known as chlor-alkali process. This process in which we are taking NaCl and water and we are passing electricity through that, this is also known as chlor-alkali process. Why so? Chlor means chlorine gas, alkali means sodium hydroxide. That's why it's also known as chlor-alkali process in which we are getting this thing. So electrolysis I have to show over here. So what is left now? So I told you preparation is very important. In preparation you have to keep in mind raw materials and reaction also. Everything I'll mention over here. Just wait for a while. I'll just bring my duster over here. So I'm here with the duster. Okay. So this is all about preparation. Preparation, raw material, NaCl and water. Okay. These two combined, these two together, they are known as brine. I can directly write a reaction over here. How do you write reaction? You have to pass electricity. You will get these two things. So this is the reaction. Reaction is also important over here. Okay. Now and next thing, I'll show you the procedure over here. So since this is electrolysis, we have to use electrolytic cell. So this is my electrolytic cell. What is electrolytic cell? Whenever we perform electrolysis, we take a vessel that is known as electrolytic cell. ठीक है? तो मैंने कंटेनर ले लिया. इस कंटेनर में मेरी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, तो इसलिए मैं इसको क्या कहूंगी? इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इसमें मुझे क्या चाहिए? Look at the reaction. You have to go with the reaction in this preparation. NaCl and water. तो मैं इसमें NaCl और water लूंगी. मैं can I together write over here brine? इसका मतलब मैंने NaCl और water दोनों इकट्ठे ले लिए. ठीक है? Now what's the next step? I have to use a rod that is known as anode, another one is cathode. मैंने दो rods ले ली. एक कंटेनर लिया. ठीक है? आप टेकन अ कंटेनर that should be non-conducting. ओके, कोई भी कंटेनर आप ले सकते हो. In this you have to put this solution of NaCl and water. Okay, you have taken over here brine, and afterwards you will take two rods over here. Now you have to connect these two rods with battery. Okay, you will connect these two rods with battery. So this is a battery over here. This is positive terminal, this is negative terminal. हमेशा याद रखना जब भी कोई भी इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये ग्रेफाइट की भी हो सकती है, could take carbon also. Carbon is a form of graphite is a form of carbon only. तो जैसे मैंने ग्रेफाइट की ली, तो मैं इसके साथ कनेक्शन करूंगी. Look over here. I took a vessel, I kept brine in that. ठीक है, मैंने एक वेसल लिया, उसमें मैंने ब्राइन डाल दिया, NaCl and water. उसके मैंने दो रॉड्स ले ली, चाहे वो आप कार्बन की ले लो, ग्रेफाइट ले लो, anything can take, both are same as well. I have taken two rods. अब मैंने इन दो रॉड्स को वायर के साथ कनेक्ट कर देना बैटरी के साथ. Okay, I'll connect them with the battery through wires. Now keep in mind, जो बैटरी होती है उसका एक पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव एंड होता है. जो भी रॉड पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्टेड है उसे हम कह देंगे एनोड. वो वाली रोड बन जाएगी एनोड. ये पॉजिटिव एंड है, जो ये एनोड होगी. तो जो नेगेटिव वाली साइड बैटरी के साथ जुड़ेगी उसको कहते हैं हम कैथोड. हमेशा याद रखना, एनोड, एनोड कौन सा वाला है? पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी. ओके, जब भी किसी रॉड को हम पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी से ज्वाइन करेंगे दैट इज कॉल्ड एनोड. कैथोड, नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी.
ओके, एक और चीज याद रखनी है आपको, एंड ओके आफ्टरवर्ड्स आई टेल दैट थिंग. डाल दिया इसमें ब्राइन. ब्राइन क्या था? NaCl और वाटर. ये था ब्राइन आपका. अब हमेशा याद रखना, जैसे ही मैंने इसमें NaCl डाला, NeCl सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड का मतलब है उन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. बेटा जैसे ही मैंने उसको यहाँ पे डाला, ठीक है, सिर्फ सॉल्ट डाला मैंने, पानी नहीं डाला अभी. जैसे ही मैं पानी डालूंगी तो क्या होगा, इसका Na अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा. ओके, Na अलग हो गया, Cl नेगेटिव अलग हो गया. ठीक है, जैसे ही मैंने पानी डाला. नाउ व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज ऑफ वाटर. वाटर इज मेड अप ऑफ H2O. वाटर इज मेड अप ऑफ H2O. ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज लाइक O is negatively charged, these two are positively charged, partial positive charge. होता क्या है, जैसे ही हम NaCl को डालते हैं और पानी डालते हैं, Na इसमें क्या होता है, Na पॉजिटिव होता है, तो ये जो नेगेटिव O होता है ये ना इसको अपनी ओर खींचता है. जस्ट इमेजिन NaCl ये और वाटर है. वाटर में क्या है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अपनी ओर खींचता है, और ये दोनों पॉजिटिव वाले हैं, ये Cl नेगेटिव को खींचेंगे. जैसे ही मैंने NaCl डाला और मैंने पानी डाला, पानी इसको खींचने का काम करेगा. जैसे ही वो खींचेगा तो इसके NaCl के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाएगी, और हमारे पास ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव रह जाएगा. ये टुगेदर काइनिक कंपाउंड नहीं है. अभी क्या बन गया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और वाटर भी ब्रेक डाउन हो गया. वाटर क्या बन जाता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव. अब हमारे पास इस लिक्विड में ये 4 तरह के आयंस आ गए. वी हैव 4 आयंस इन आवर लिक्विड. We have 4 ions in our liquid. Fine. अब जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगी, when this battery is switched on, अब देखो, you know this thing, whenever ions are there and current is there, then ions they help in completing that circuit and it's allowed to flow. अब ये circuit complete हो गया, तो ये ions के कारण ये, अब because of this electricity and the circuit is complete, ions will start moving. अब वो जाएंगे कहाँ पे, अब ये जाएंगे यहाँ पे, एनोड पे और कैथोड पे. अब जाएंगे कैसे, हमेशा याद रखना, एनोड पे अनायन जाता है A. कैथोड पे कटायन जाता है C. कैथोड, कटायन गोज टू कैथोड, अनायन गोज टू एनोड. अब आपको पता है अनायन कौन सा होता है, अनायन इज नेगेटिव चार्ज वाला जो रेडिकल होता है, कटायन होता है पॉजिटिव चार्ज वाला. अब कंफ्यूज मत होना. देखो एनोड कौन सी रोड है, जो पॉजिटिव एंड के साथ अट्रैक्ट है. ठीक है, तो तभी तो इसके पास अनायन जाएगा, हमेशा ऑपोजिट अट्रैक्ट. तो एनोड अगर पॉजिटिव एंड के पास है, ये देखो ये पॉजिटिव एंड है और ये हमारी एनोड है. अब पॉजिटिव वाला जो है उसके पास कौन जाएगा, नेगेटिव वाला. ऑपोजिट ही तो अट्रैक्ट करेंगे. तो ये जो पॉजिटिव वाली रॉड है हमारी, इसके पास जाएंगे नेगेटिव आयन. जैसे Cl नेगेटिव जाएगा और OH नेगेटिव जाएगा, ये दोनों यहां जाएंगे. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब कैथोड कौन सी है, नेगेटिव वाले, तो उसके पास कौन जाएगा, पॉजिटिव वाले. ये दोनों जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, एंड व्हाट यू गोइंग टू गेट एट द एंड, यहाँ पे बन जाएगी हमारे पास क्लोरीन गैस. देखो व्हाट इज फाउंड ओवर हियर, लुक हियर, NaOH बनता है, Cl2 बनता है और H2 बनता है. अल्टीमेटली क्या हो जाता है, जब भी ये दोनों यहाँ जाते हैं, हमेशा याद रखना बेटा, जब भी ये दोनों यहाँ जाएंगे तो इनमें ना कॉम्पिटिशन हो जाता है. ये दोनों के जाने से ना यहाँ कॉम्पिटिशन होगा. इस कॉम्पिटिशन में ये जीत जाता है. ठीक है, ये जीत जाता है. बिकॉज व्हेन यू स्टडी इलेक्ट्रोलिसिस तो एक सीरीज हमें याद करनी पड़ती है. उस सीरीज में जो सबसे ऊपर है वो जीत जाता है. उस सबसे ऊपर में क्लोरीन का नेम होता है. OH से तो ऊपर आता है क्लोरीन, तो ये जीत जाएगा. यहाँ पे ये यहीं पे रहेगा. यहाँ पे क्या निकल आ गया हमारे पास, क्लोरीन. क्लोरीन गैस बन जाएगी हमारी. कौन सी रोड पे बनी क्लोरीन गैस, एनोड पे. हाइड्रोजन, अब देखो जब इन दोनों में कॉम्पिटिशन हुआ, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में भी कॉम्पिटिशन होता है. जब इन दोनों में कॉम्पिटिशन होता है, देन अगेन व्हाट हैपेंस, वन विल विन. हियर ओवर हियर H पॉजिटिव इज गोइंग टू विन, क्योंकि ये उस सीरीज में ऊपर है Na पॉजिटिव से, तो ये विन करेगी. तो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगी. तो हमारे पास कौन सी गैस आ गई, हाइड्रोजन गैस. और यहाँ पे लिक्विड में कौन रह गया, Na रह गया, OH रह गया, बिकॉज ये हार गए थे यहाँ पे. NaOH इज लेफ्ट, तो हमारे पास यहाँ पे रह गया NaOH. सो द एंड रिजल्ट of this method of preparation is, at a node which gas is formed,
chlorine gas. At cathode, which gas is formed? Hydrogen gas. Near the cathode you will get to see something that is the sodium hydroxide. क्योंकि सोडियम और हाइड्रोक्साइड ये रह जाता है लिक्विड में, सो वी गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा जो पर्टिकुलर केमिकल है कॉस्टिक सोडा वो हमें चाहिए था, वो हम निकाल लेते हैं. गैसेस यहाँ से ले लेते हैं हम, और हम लिक्विड में से हम अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड निकाल लेते हैं. So this is the method of preparation. If you are having any doubt regarding this, you are feel free to ask. Okay, you can send me a message. You can ask about it. Now I told you in this method, first of all, preparation is important. Second is uses are important. Do go with the diagram. I have drawn this diagram. This also is valid over here. If you cannot go with the diagram of the book. Now talking about the uses. Ab uses kya hai? When I talk about the uses of chlorine, always keep in mind in swimming pools or wherever water is there. We people for municipal corporation they store water. They use chlorine gas for disinfection. Disinfection means to kill germs. So swimming pool में अगर germs को kill करना है, we use water. So for water disinfectant, this chlorine gas is used. Okay, and moreover, this is also used for the manufacturing of polyvinyl chlorides. Chloride है उसमें, तो उसकी preparation के लिए भी use होती है. CFCs की preparation में भी ये use हो जाती है. Pesticides की formation में भी ये use हो जाती है chlorine gas. Talking about hydrogen gas, it's used as a fuel. This you all know. Then it is also used as a formation for the formation of ammonia, जो कि further use होता है fertilizers बनाने में. तो ये ammonia की manufacturing में use होती है. Next thing is uses for hydrogenation. मतलब कि जो vegetable oil, जो liquid वाला oil होता है, उसको घी वगैरह बनाने के लिए भी hydrogen gas is used. Okay, this you have to keep in mind. Along with that, there's a one word in your book, margarine. Okay, keep in mind that's a processed form of butter. ठीक है? That's also hydrogen gas is used. I told you कि वो liquid को वो solid hydrogenation that I've used, that's for the same thing. Now talking about this sodium, and I have told you the uses of this also, this also, this also. No, this I'm going to tell right now. So NaOH is this. First of all, it's used in labs. Okay, ये lab में use होता है because it's a base. You can see yourself, it's a base. It's used in labs. Next thing where it is used, it's used for making fibers, artificial fibers. It's used in textile industry. It is used in paper industries also. So it finds various uses here and there. It's used for degreasing. ठीक है, कोई grease है oil वगैरह की, तो इसको remove करने में, metal पे कोई grease आ गई, इसको remove करने में भी help कर जाता है. It's used for the manufacturing of soaps and detergents also. So please learn the preparation of this sodium hydroxide and uses of sodium hydroxide. You have to go through them once. Okay. We started from where? From common salt. Keep in mind it's a neutral salt. ये neutral salt है because the formula is NaCl. It means from which acid it is made. ये कौन से acid से बनता है? HCl. कौन से base से बनता है? NaOH. Both are strong in nature. Both are strong. That's why it is a neutral salt. That is all from these things. Okay. So that's all about the topic. I hope you understood the topic. If there is any doubt, please feel free to ask. Okay. So stay home, stay safe. Thank you.